नमस्कार आपण समस्त को यह वीडियो बहुत बहुत स्वागत। तो आज वीडियो में आप सहित colonialism तो व्हाट इज colonialism डिस्क्राइब इट्स बेसिक फीचर। तो colonialism कौन आ तार बेसिक फीचर रो नोट्स टी आप वीडियो शेयर करी आ वीडियो आगे को कहबी जे आपन पीडीएफ बा नोट्स टी को किपर भाई पाई परिबे। तो चलो तो स्टार्ट करबा। तो फास्ट हो हम देखबे कोन ना टर्म colonialism इज यूज्ड टू इंडिकेट ए सिचुएशन माने कौन जो टर्म कॉलोनिज्म बा औपनिवेशवाद गोटे सिचुएशन को इंडिकेट करछि जहाँकि इकोनॉमिकली प्रॉस्पेरियस एंड डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ यूरोप एस्टैब्लिश देयर कंट्रोल ओवर द बैकवर्ड पुअर एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ एशिया आफ्रिका एंड लैटिन अमेरिका। तो जो थिला डेवलप माने विकसित राष्ट्र बा नेशन हम कहि परिबा यूरोप से तार कौन औपनिवेश बिजनेस इनकम रे बा इंस्टीट्यूशन रे बा इकोनॉमिकली पर्पज रे एंड डेवलप कंट्रीज कौन करथिला ना यूरोप तार सब औपनिवेश कौन एस्टाब्लिश करथिला केउ प्रदेश ना एशिया रे आफ्रिका रे लैटिन अमेरिका से एस्टाब्लिश करथिला। द बेसिक फीचर्स ऑफ colonialism इज एक्सप्लोइटेशन ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज बाय द रिच यूरोपियन नेशन। तो तार फीचर्स बा नाम कौन कहबा ना तार फीचर्स थिला वैशिष्ट्य थिला जे कौन ना जो से विकसित से कौन ना विकासोन्मुखी बा जो गुड़िक अंडर डेवलप्ड कंट्री थिले ताको एक्सप्लोइटेशन करथिले सेमानकर औप colonialism को एस्टाब्लिश कर देश रे। colonies were used to acquire cheap and material and labor for dumping in their markets. The Finnish produced by the colonial power. तो कौन से फास्ट चीप फ्री सब मेटेरियल किनदेवे तापर ताकू कौन गोटे भल प्रोडक्ट रे ताकू करिकरी ताकू फिनिश करिकरी ताकू मार्केट बिकिबे। बोथ colonialism and imperialism were exploitative and undemocratic. One naturally followed the other. The colonialists have their arguments to support this system of exploitations. Next देखिए according to Lemmer and Watkins, so they argue that colonialism was a necessary prelude to the emergence of most of the free and independent states of the world and to the 20th century awakening of Asia and Africa. In simple word कौन सहज आम कह गले जे colonialism is a historical and political in which powerful country जो कौन powerful country or group of countries exerts control over the territories often geographically and culturally destination for the purpose of economic, political and social exploitation. तो कौन करथिले ना जो सब पावरफुल कंट्री थिले बा जो कंट्री मान ग्रुप से माने इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली पावर को एक्सप्लोइट करथिले कोन कोन ऊपर ना अंडर डेवलप्ड कंट्रीज ऊपर से माने को अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज को जाइकरी निजर कॉलोनीज को एस्टाब्लिश करिकरी से ताद्रा से माने कोन करथिले इकोनॉमिक पर्पस किबा न पॉलिटिकल पर्पस रे से सब एक्सप्लोरेशन करथिले। इट टाइपिकली इन्वॉल्व्स द एस्टाब्लिशमेंट ऑफ कॉलोनीज इन दिस टेरिटरीज एंड द इम्पोजिशन ऑफ द कॉलोनाइजिंग पावर कल्चर वैल्यूज एंड गवर्नेंस सिस्टम ऑन द कॉलोनाइज्ड पीपल। All colonial governments paid certain attributes they are distributed below. तो कुछ attributes देखिबा तो कौन ना colonial political system were under democratic. तो colonial system did not allow popular participation. जो colonial system रे से कौन popular participation नथिले। Decisions and policies were made with the little or no input from the people. माने कौन जो डिसीजन थिला किबा पॉलिसी सब पीपल मानकर किछि इनपुट निया जाउतला सब कोन कॉलोनाइज्ड पीपल माने ताहा सब डिसीजन नउतले। देयर वाज नो मेकानिज्म फ्रॉम द पीपल टू ऑफिशियली एक्सप्रेस देयर ओपिनियन। तो सेठी किछि मेकानिज्म नथिला जे पीपल माने से मानकर ओपिनियंस को से माने कोन कॉलोनाइज्ड प्रदान करिवे। लॉ एंड ऑर्डर तो लॉ एंड ऑर्डर कोन ना colonial rule was imposed without consent from the African people, so people were not happy and colonial government faced the potential of civil disobedience or outright resistance to the rule. As a result जार परिणाम कौन है in most African colonies more money spent on developing and maintaining police for the and the army then was spent on education and जहाँ कौन है ना लॉ ठीक ना तो आम सिंपली बुझा से खाली कौन पुलिस मैंने खर्च कले कि एजुकेशन रे कि हाउसिंग रे एंड हेल्थ रे से कौन बेसी खर्च कर पारे ना। द colonial governments lack capacity तो colonial governments कौन कैपेसिटी रो लेक थिला। The most colonial governments were not rich. The European colonial powers not willing to fund to governing their colonies to an Africa entirely. Each colony was responsible for raising most of their revenue needed to fund the operation
of most colonial rule. But no matter how rich in resources a colony was, the colonial governments were not able to provide basic infrastructure and basic social services. Next है ना colonial governments political parties divide and rule. So given the lack of capacity and the strong emphasis on the law and order, all forms of colonial rule were engaged in divide and rule by inputting policies that will internationally weaken the indigenous power networks and institutions. Next कौन ना बेसिक फीचर्स ऑफ कॉलोनिज्म इंक्लूड तो तार बर्तमान कौन बेसिक फीचर्स देखा तो बेसिक फीचर कौन फास्ट आसो एम्पेरियलिज्म तो एम्पेरियलिज्म माने कौन बुझे ना कॉलोनिज्म इज ऑफ्टन एन एक्सटेंसिव एम्पेरियलिज्म वेयर ए डोमिनेंट नेशन seeks to expand influence and control over the regions तो कौन जो कॉलोनिज्म रे जो नेशन ता डोमिनेंस करछि माने डोमिनेंट में कौन जो आसी अधिपत्य स्थापित करछि से कौन करछि ना से पूरा तार इन्फ्लुएंस प्रभाव पकोछि आउ तार कंट्रोल मध्य से रीजन नै जाउछि imperial powers establish colonies as a means to extract resources expand markets for their goods and increase their जिओ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस तो जहाँद्वारा कौन होची ना मार्केट में तांकर जो एक्सपोर्ट को अधिक होची आउ रिसोर्स मध्य से अधिक भाव कौन व्यवहार करुच्ची आउ इनक्रीज दर आउ तांकर कौन जिओ पॉलिटिकल को इनक्रीज माने कौन अधिक विस्तार करुच्ची नेक्स्ट देखिए टेरिटोरियल एक्सपांशन तो कॉलोनाइजर्स एक्वायर न्यू टेरिटोरीज फोर्स negotiations or other means. These territories often exist far from the colonizing nation and are often populated by the indigenous people. Next is economic exploitation. So one of the primary motivation for colonialism is economic gain. The colonizing nation exploit the resources of the colonized territories, including minerals, agriculture products, and labor to benefit its own economy. नेक्स्ट क्या पॉलिटिकल कंट्रोल तो पॉलिटिकल कंट्रोल कौन ना colonizers establish a historical hierarchical political system where power is concentrated in the hands of the colonial administrator or puppet government loyal to colonizing nation तो कौन colonizer करदुची से सीडी कौन colonialism रे कौन से गवर्नमेंट ताकर puppet हे होची जो माने को जो माने कि colonizers को establish करदुनी ये सब कौन जो कौन हमरो colonialism को the colonized people have limited or no representation in the decision making process आज जोंथरे कि जो colonized people माने किछि लिमिट थांती आ किछि रिप्रेजेंटेशन करि पारंतनी decision making process रे नेक्स्ट कोन ना कल्चरल हेगेमनी तो कल्चरल हेगेमनी कोन ना colonial power typically impose their language culture religion and legal system on the colonized people that often leads to the profession of indigenous culture and traditions. Next देखिबा infrastructure development. तो infrastructure development कोन ना colonizers may invest in infrastructure development such as roads, railways and ports to facilitate research, exploitations and export. However, these projects are often designed primarily to benefit the colonizers. मात्र कौन होची ना कॉलोनिज्म भलो अछि जे इंफ्रास्ट्रक्चर कोन डेवलप हे होची कॉलोनिज्म रे एंड कोन देखिया ना लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस तो लॉन्ग टर्म रे कोन होची ना द लेगेसी ऑफ कॉलोनिज्म कैन बी seen in the precedents economic political and social disparities that exist in many former colonies. The disparities often contribute to ongoing conflicts and challenges even after the formal decolonizations. Next देखिया तो discuss the